Hi all of you. How AI replaced the life of developer. Here with me, two developers. They both look like colleagues, but they are not. One is a traditional developer and one is AI developer. So today we'll see that how AI is changing their life and what they think. Does AI is really changing their job or they helping them? So let's we all together see who can win the argument in this battle. How fast can you launch an MVP? With AI tools, I can make prototype in a days and MVP in a weeks. What about you? अच्छा, मैं 8 to 10 weeks तो लगेंगे मुझे, लेकिन हाँ वो कोडिंग पिक्सअप परफेक्ट होगा. What about customization and flexibility? For manual coder, yeah, customization is great. Also, it is a flexible क्योंकि हम स्टार्ट से ही उसको पिक्सअप परफेक्ट बनाएंगे with responsive. What about you? So for AI, if I want to integrate any chatbots, I will do in a weeks or in a days. Okay, and what about quality and reliability? For quality and reliability, we have a picture perfect scene from the earlier. So we are making all the things better together. What about you? For me, manual QA process is must because code deeply check होना चाहिए, line to line coding check होनी चाहिए. So हाँ, we rely on a manual coding. Okay, so what about the timeline? टाइमलाइन ऑब्वियसली एआई से ज़्यादा ही रहेगा, लेकिन हाँ बाद में उसको सॉल्व करने में उतना टाइम नहीं लगेगा जितना टाइम फिर एआई से पूछो, फिर उसका HTML लो, फिर उसको स्ट्रक्चर सेट करो. तो हाँ वो पहले से ही सही से ही वो प्रोसेस फ्लो में ही जाएगा. What about management? How many people do you want in your team if you want to go for one project? इट इज़ अबाउट द प्रोजेक्ट टाइमलाइन. ऑब्वियसली अगर प्रोजेक्ट 2-3 पेज का ही है तो 1 डेवलपर ही चाहिए, लेकिन अगर प्रोजेक्ट बड़ा है या 8-10 पेज 40 पेजेस या ज़्यादा ही है तो हाँ मुझे 2 से 3 डेवलपर तो लगेंगे. You know, for AI, so we need only 1 or 2 developer. Actually, we have everything on platform. So we need to use that tools and we can create any project from 1 to 2 developer because AI knows everything from Google, from any sources, media, news and everywhere. They know each and everything from like until to like past 50 years. So we are ahead of everything. ओके, लेकिन आप फुल्ली एआई पे डिपेंडेबल नहीं हो सकते ना, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है जिसमें मैनुअल कोडर की भी ज़रूरत पड़ेगी. क्योंकि हर बार अगर मुझे एक चीज़ के लिए एआई को बोलना पड़ रहा है कि हाँ मेरी बॉर्डर रेडियस फिक्स कर दे, तब तक तो आपकी कॉफ़ी ठंडी हो जाएगी. You know, sketch to code. Actually, every AI tools has a sketch to code. If I will sketch and I will get the HTML in 1 minute. हाँ, लेकिन अगर स्केच से ही बनाना होता तो फिर भी एआई इतना परफेक्ट नहीं देता. You need a design when you want to go for the HTML. But if you have a design and you can go ahead with the coding like AI tools, then you will get the HTML as fast as possible. इवन आई हैव अ डिज़ाइन एंड आई वांट टू से एआई कि मुझे इतना सेक्शन बना दो, फिर भी उसको वो बैकग्राउंड कलर, वो बॉक्स शेडो, वो उसको नहीं पता पड़ेगा जितना मुझे पता है कि मुझे कैसे उसको कहाँ रखना है और कैसे सेट करना है. That is the thing. AI wants to learn and AI will learn day by day. That is why AI will take over every job. लेकिन कई बार ना हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम उतना लिख कर उसको फिर इम्प्लीमेंट करें. तो बेटर है कि जब मुझे पता है कि मुझे कहाँ चेंजेस करने हैं, क्या चेंजेस करने हैं, तो बेटर है कि मैं फिर अपने आप से ही कर लूँ विदाउट आस्किंग एआई. You have to do with the AI because you have the timeline. That is why you need to complete and you need to give the prototype. So it will be go ahead in like 1 or 2 days. So AI will help you onto that in the HTML, in the background and the backend or in Deus part also. एक पेज कंप्लीट होने के बाद वापस उसको वो चेक करना ना पड़े, तो ये ऐसे बेटर है कि ट्रेडिशनल कोडर को ही दो, क्योंकि वो फिर जितना पिक्सल परफेक्ट करेगा, वो जितना रिस्पॉन्सिव उसका परफेक्ट होगा, तो बाद में उसको उतना डिटेल में जाना नहीं पड़ेगा. That is the thing. We are great together. Thank you both of you for giving the insightful information about the AI and the traditional development. I hope you all are enjoying. I know they are developers, so it's a bit boring, but this is a very useful information, and I know every developer can understand. They all are like them. They try to do as much as normal conversation that we can do in normal life. So might be you get the idea.
that how traditional development and AI development can impact on our any kind of development technology. So now it's your turn. Give your input. Do you think AI can replace your job or AI will helpful? Give your comment as a developer. What is your feedback?